Hello friends, myself R.V. Ashwini Rastogi from Vivid Valuation Professional LLP. We are IVBI registered valuer in all three assets: security and financial asset, plant and machinery, as well as land and building. So if you require valuation report, we can assist you. So now today we come up with one of important video कि वैल्यूशन कैसे होगी अनकोटेड शेयर्स की। कंपनी लिस्टेड है तो मार्केट में शेयर फ्लोट कर रहे हैं तो बीएसई एनएसई में उसका कोटेड प्राइस होता है, बट अनकोटेड शेयर्स में नेट एसेट बेसिस पे करना है या डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस पे करना है। कौन उसकी वैल्यूशन रिपोर्ट देगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर देगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा या मर्चेंट बैंकर देगा? तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56(2) सब क्लाउज 10 है, जहां पर बायर एनी पर्सन अगर उसको कम वैल्यू पे शेयर परचेज करता है, सपोज ट्रांजैक्शन 100 रुपये पे हो जाती है और उसका फेयर मार्केट वैल्यू 500 है, तो इस वाले सिनेरियो में 400 रुपीज़ की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टैक्स हो जाएगी इन द हैंड ऑफ बायर। उसका क्या, जो सेलर है उसने तो ट्रांजैक्शन 100 पे कर दी और कैश में पास कर दिया 400, तो उसका भी सॉल्यूशन है यहाँ पर सेक्शन 50 कैपिटल CA इनकम टैक्स एक्ट का है। उसका कैपिटल गेन फेयर मार्केट वैल्यू पे ही कंप्यूट होगा। उसको 500 रुपये पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना है, तो उसने 100 रुपये पे कर दी, दैट इज इररिलेवेंट। जो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू है वही इनकम टैक्स में माना जाता है। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कंप्यूट करना है? एज पर रूल 11 UA ऑफ इनकम टैक्स रूल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट is authorized to give a valuation report based on net asset basis. They have defined the rules how they arrive the valuation report. If merchant banker also can issue that kind of report. merchant banker मार्केट वैल्यू अप्रोच के बेसिस पे भी, DCF बेसिस पे भी वैल्यूएशन रिपोर्ट दे सकता है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल नेट एसेट बेसिस पे ही दे सकता है। कंपनी फ्रेश इशू शेयर्स कर रही है, इस वाले सिनेरियो में तो कंपनी को भी रिक्वायर्ड है कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे इशू करे। अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू पे इशू नहीं करती तो यहाँ पर कंपनी की इनकम का जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो भी टैक्स हो जाएगा सेक्शन 56(2) सब क्लाउज 7B में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो फेयर मार्केट वैल्यू से आप कम पे इशू कर रहे हैं, वहाँ पर नोशनल इनकम आपकी कंपनी हैंड में टैक्स हो जाएगी। तो इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 56(2) सब क्लाउज 10 है और कंपनी के लिए 56(2) सब क्लाउज 7B है। फ्रेश इशू में तो वैसे भी आपको एज पर कंपनी एक्ट सेक्शन 62(1)(c) में रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही आपको रिपोर्ट लेनी है, वैल्यूएशन रिपोर्ट, और वो वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट भी से भी ले सकते हैं इनकम टैक्स के पर्पज से, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर से भी ले सकते हैं। अब अगर हम कोई नॉन रेजिडेंट को शेयर इशू कर रहे हैं तो यहाँ पर फेमा का भी रोल इम्पॉर्टेंट है कि हमें फेमा की प्राइसिंग गाइडलाइंस का भी ख्याल रखना है। एज पर द फेमा प्राइसिंग गाइडलाइंस, आप किसी नॉन रेजिडेंट को, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को आप शेयर्स इशू करते हैं, या वो NRI किसी नॉन रेजिडेंट को शेयर सेल करता है, तो हमें फेमा प्राइसिंग गाइडलाइंस का भी फॉलो करना है कि वो भी फेयर वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। उस वाले सिनेरियो में आपको RBI में FCRA भी फाइल करना होता है RBI पोर्टल में। अगर कोई कंपनी आपको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में आपको पैसा लगा रही है तो FDI आएगी, जो भी आप पे फॉरेन इनवर्ट रेमिटेंस होगा, दैट इज ट्रीटेड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो उसमें आपको FCRA फॉर्म फाइल करना होता है RBI के पोर्टल पे, और विद इन 30 डेज आपका वो फॉर्म फाइल हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ
फॉरेन रेमिटेंस रिसीव इन इंडिया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आपकी कैलकुलेशन कैसे होनी है, क्या क्या प्रोविज़न को आपको ध्यान रखना है फॉर फेयर मार्केट वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर्स। ट्रांसफ़र के केस में आपकी वैल्यूशन होनी है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, और उसका भी 11 यूए में मेथड डिफाइंड है। अगर आपकी वहाँ पर कोई आपकी बैलेंस शीट में कोई ज्वेलरी है या सिक्योरिटी है, कोई लायबिलिटी है, तो उसको भी आपको एक सेपरेट वैल्यूशन लेनी होगी फॉर द पर्पज ऑफ टू अराइव द वैल्यूशन एज पर रूल 11 यूए। ट्रांसफ़र के केस में आपको एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यूशन ही ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए, तो आपको फ्रेश इशू में लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 की भी चल जाएगी, बट ट्रांसफ़र के केस में ऑन द डेट ऑफ वैल्यूशन ही चाहिए होती है, तो वो तो ऑडिटेड होती नहीं है। तो उस वाले केस में आप योर रीसेंट जो भी आपकी प्रोविजनल बैलेंस शीट है उसके बेसिस पे भी आप वैल्यूशन अराइव कर सकते हैं। तो नाउ वी डिस्कस इन डिटेल हाउ यू कंप्यूट द फेयर वैल्यू ऑफ द shares of unquoted shares. So friends, understanding of 11 UA rule with the implication of section 56 to 70, 56 to 10 and 50 CA, section 195 PMI pricing guideline. So once you are fresh issuer of the equity share, you must have this valuation report from the chartered accountant that is based on NAV basis. If you uh, want your valuation report should be on DCF basis, you must get it from the merchant bank. In case of transfer of shares, suppose the transaction between A and B, right? So in that scenario, you must have a uh, you want the two transaction at 100 rupees and the fair market value of that share is 500 rupees. So 400 will be notional in other source income in the hand of B, and all the capital gain in respect of the seller A will be taxed at 500, not 100. So this is the section 56 to 10. So 11A rule says that your calculation for fair market value will be A minus B multiplied by FB upon P. So let us first discuss how this work out for fair market value of unquoted equity share. So first of all, you need to calculate all assets, right, and less liability A minus L, right. This is your A and liability is B, and multiply by face value of equity share divided by P, weight of equity share value. You will get it the fair market value of equity share. So this is the data sheet we have to prepare, and this is the back working. We have to make a financial statement in this segment. So total asset we have to segregate into the operational asset and non-operational asset, and separate the property, plant and equipment. So total your asset liability will be segregated into the operational liability and borrowing, and shareholder funds is separately shown. So once you get it, this the valuation, you you provide this kind of certificate. We have examined the audited statement. Important thing is that in respect of fresh issue, you provide your valuation report based on the last audited balance sheet. If in case of transfer of share, the valuation has to be provided on the date of valuation date. Suppose the transfer is took place on today 29th March 2024. So you have to get it audited balance sheet as of today. If that is not available, you can rely upon the provisional balance. So this is the book value and the face value of equity shares and the paid up equity value. You will get it the your fair value. So in case of
Transfer of shares. Uh, One important thing is here B plus C plus D is also there. What is the B plus C and D? Let us discuss the provision, the price which is jewelry. Suppose your balance sheet is also appearing some gold stock, then you have to take a separate valuation report from the jewelers who is the expert, and the fair market value of shares in security. Suppose you have already invested in some other subsidiary company, so the same process you have to follow, the fair market value of that security. At same time, if you have some land or piece of some buildings, you should get it valuation report from the land and building who are expert, and you can also go with the IBBI registered valuer who are a land building valuer. So this is the process for valuation as per the rule 11 UA for getting the valuation for unquoted shares. So if I have discussed section 50 as well as discussed this section 56 2 sub 56 2 subclause 10. This is the my article. I will definitely put it this in link in the my description box, so that you can download and read at any time. So in there is a in case of valuation there is a issuer or transfer. In case of issue of shares, the issuer has to comply section 56 to section 10. In case of seller or buyer, the 56 to 10 or 50 CA play important role. So guys, in case of NRI, you have to take care of section 195 and FEMA guidelines for pricing of shares. So this is from my side. Hope so you like this video, and whatever your question you can come before me, and you share this video to another your guys. Thank you.